Hello dear viewers, welcome back to yet another lecture on 10 series. As you know, I have been covering 10 series and I have already covered 3 past tenses, and today I'm going to teach you the last past tense, which is past perfect continuous or progressive tense. So as you know, I'll be discussing 4 things जो मैं करता आ रहा हूँ बाकी वीडियोस में भी. Definition, identification of tense in Urdu, helping verb, formation. So let's understand this tense one by one और step by step ताकि आपको अच्छे से tense समझ आए कि what is past perfect continuous and why we use it. And I'll be bilingual today so that it is easier to understand, especially for the new learners, for the beginners. And let's get started and let's understand this tense. So I'll start it with the definition. What is definition और इस tense की पहचान क्या है? So dear listeners, we use this tense, or this tense shows an action, or this tense is used to show an action which is started in the past, continued for some time and was still in progress until another action or a specific point in the past. Now what does it mean? Let me explain, let me elaborate, let me illustrate so that you can understand it easily. It means that we talk about an action in this tense which started in the past but it did not end directly or suddenly. Rather, it continued for some times, or it was in progress for some times in the past before another action started or before another specific point of time in the past. Okay, let me now explain it Urdu as well. ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन माजी में एकदम खत्म नहीं हुआ या फौरन खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ टाइम तक चला, कुछ टाइम तक जारी रहा जब तक कोई और काम या कोई और एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. एंड मोस्टली विद पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज पास्ट सिंपल टेंस. So is the case with past perfect continuous. We combine or we use past simple tense to make it longer, to make it a compound sentence or make it a complex sentence depending on the context of sentence. So we just add past simple tense with past perfect or past perfect continuous tense to make our sentences. What is IDL Urdu? IDL Urdu इसकी क्या है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता जा रहा हूँ या बताता आ रहा हूँ कि do not rely always on IDL Urdu. IDL Urdu तो सिर्फ आपको एक हिंट देते हैं कि टेंस की जो है उर्दू आपको सिर्फ इतना गाइड करती है कि आपका जुमला कौन से टेंस में है. तो इसीलिए आपको दिया जाता है कि कभी कभार आपका जुमला जो है वो हमेशा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे से एंड हो, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन बी रहा था, रही थी, रहे थे, लाइक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट वी स्टडीड बिफोर दिस टेंस. तो उसकी उर्दू और इसकी जो उर्दू की पहचान है, उन दोनों में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन इन दोनों का फर्क हमें कहां से पता चल सकता है या कैसे पता चल सकता है? There is use of since and for, point of time and period of time. So before explaining helping verbs in formation, इस चीज को थोड़ा मैं वाजे कर लूं, इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लूं ताकि स्टूडेंट्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपको कोई समझने में परेशानी ना हो. अगर आपका जुमला उर्दू का एंड हो रहा है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे से, तो वो जो है क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है. इफ देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर आप किसी टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की या पीरियड ऑफ टाइम की, then the sentence would not be past continuous, rather it would be past perfect continuous. Let me share an example with you. अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कराची जा रहा था, now रहा था, right? So I would use past continuous tense because I am talking about an action that was going on at the speaking in the past. I was going to Karachi. But if I use time or if I mention time, either point of time or period of time, so I would not translate my sentence as per past continuous tense. Rather I would use past perfect continuous tense. मिसाल तौर पे मैं आधे घंटे से कराची जा रहा था, मैं 1 घंटे से कराची जा रहा था, मैं 10 मिनट से कराची जा रहा था. So I would use past perfect continuous tense. So I would not say I was going to Karachi for half an hour. Rather I would say I had been going to Karachi for half an hour or
I was eating food for 10 minutes. If you are saying मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, I was eating food. मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था, I had been eating food for 10 minutes. वो काम कर रहे थे, they were doing their work. वो सुबह से काम कर रहे थे, they had been working since morning. तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन पे आप ज्यादा रिलाय इस तरह भी ना करें कि आपको दोनों टेंस की कंफ्यूजन या दोनों टेंस में कंफ्यूजन हो, दोनों टेंस को अच्छे से आप समझ ना पाए. बहरहाल आप इसको सिर्फ समझें. अगर आप सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे में बात कर रहे हैं तो इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. उसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट मी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. As I already shared some examples, we have only one helping verb in this tense and that is had been. Unlike other tenses, जैसे हमने लास्ट में जो है पास्ट से पहले जो है प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पे we have two helping verbs, has been, have been. तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही helping verb है that we use with all the subjects, whether it is singular or plural. He, she, it, I, we, you, they, सबके साथ हम had been का इस्तेमाल करेंगे. Now formation. Formation helps you make or translate a sentence properly, grammatically, without any mistake. So first we have subject and after that HV stands for helping verb. We have only one helping verb, had been, and then we use present participle form of the verb, or in simple words we call it ing form of the verb, and then object, and after object we have to see whether it's point of time or period of time. अगर point of time की बात हो रही है और एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में इन दोनों का फर्क आप लोग को बता चुका हूं कि व्हाट इज सिंस एंड व्हाट इज फॉर एंड वेयर डू वी यूज देम. लेट मी री एक्सप्लेन इट शॉर्टली. वी यूज सिंस व्हेन देयर इज अ फिक्स टाइम, फिक्स दिन, फिक्स महीना, फिक्स साल, फिक्स किसी इंसान की जिंदगी का एज, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, दोपहर, शाम, जनवरी और मार्च और अप्रैल 2010, 2015, 2022. So we use since for such time period which is a specific time, which is exact time, and then we use for period of time, यानी जहां पे टाइम तो है लेकिन वो टाइम फिक्स नहीं है, 10 मिनट से, 15 मिनट से, कई सालों से, बड़े अरसे से, 10 दिनों से. अब कौन से 10 दिन, कौन से 10 मिनट, कौन से 2 घंटे, वी डोंट एग्जैक्टली नो. टाइम तो है लेकिन वो टाइम फिक्स नहीं है तो वी कॉल इट पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए हम for का इस्तेमाल करते हैं. And then let's talk about, or let's look at the examples here. We have got example. He had been working here for some years before he left the job. Now the action was continued or was in progress before another action started. Present perfect, past perfect continuous with past simple tense. Let me share another example. There was no space so I couldn't write more examples. Let me share some more examples with you verbally ताकि आप इसको और मजीद अच्छी तरीके से समझ पाए. आई नो द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर, लेकिन बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें. एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. दे हैड बीन ईटिंग फूड बिफोर फादर अराइव्ड. दे हैड बीन ड्राइविंग द कार बिफोर दे स्टॉप्ड इट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट कैन बी रिलेटेड विद इट. And last but not the least, if you want to make a negative sentence, so you have to use not between had and been. यानी had not been होगा, had been not नहीं होगा in the negative cases. For example, I had been playing cricket. Negative, I had not been playing cricket. You are not supposed to change its form. Form verb भी same रहेगा और not जो है had been के between आएगा, यानी बीच में आएगा, बाद में नहीं आएगा. अगर आप सवालिया बनाना चाह रहे हैं इंटरोगेटिव तो आप हेड को सब्जेक्ट से पहले रखें, और अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो आप हेड को सब्जेक्ट से पहले रखें और नॉट को जो है सब्जेक्ट के बाद लगाएं, बीन से पहले. लाइक हैड शी नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन, लाइक दिस. सो दैट वुड मेक और दैट वुड चेंज योर सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू interrogative and negative sentences. Furthermore, I'll also share these details with you in the comment, so you can read about definition, ID in Urdu, helping verb and formation. In case of any problem, any confusion, feel free or don't hesitate, just comment. So this was the end of the lecture. I hope it was easy to comprehend, it was easy to understand. If you have any problem, any confusion,
Feel free to let us know in the comment. Take care. See you in the next video.